Okay, good morning. Maybe we can wait a minute or two if other people would like to join. Okay, we would like to get started. So I understand this class is a little bit early in the morning, but thank you, the four of you who have joined this morning. I hope you guys and the others have watched the videos for this week. We had two lectures once again, and both the videos were available since last Friday. We'll make two more videos available this Friday, which is tomorrow. So we can kickstart the discussion with any of the questions that you may have about the videos or the course material or the topics covered in this week. We had also uploaded let me just double check. We had uploaded the course notes. Yeah, so the course notes, the second set of the course notes, which includes the material covered this week, those were also uploaded a couple of days ago, I think maybe over the weekend. So if there are any questions from that set of notes, we'll be happy to discuss that as well. किसी का कोई question है? Anyone with any question? Are you guys able to hear me? Thank you, Saad, for confirming. कोई question ही नहीं है. If nobody has a question, I will just, very quickly summarize what was covered in this week's lecture. So we talked about a random experiment. It's a kind of an experiment that you perform, and you will get one of the many possible outputs or outcomes. Okay, so for example, rolling a dice will have 6 possible outcomes. If you roll 2 dice together, you have 6 times 6, which is 36 possible outcomes. Okay. If you roll
a dice and a coin together, you will have 6 times 2, which is 12 possible outcomes. With head, you can get 1, 2, 3, 4, 5, 6. With tail, you can get 1, 2, 3, 4, 5, 6. And these outcomes of the random experiment, a full set of these outcomes, we call this a sample space. उसको sample space कह देते हैं. You know, very, very simple concept कि आपने एक experiment perform किया है, and once you perform that experiment, if you can get one of the many possible outputs, the set of all the possible outcomes that you can get, that set is called a sample space. What we can guarantee is that when you perform the experiment, तो जो भी outcome आएगी वो उस set के अंदर लाजमी मौजूद होगी. Why? Because this set is the superset of all the possible outcomes that can result when you perform the experiment. ठीक है? So ये guaranteed है कि sample space के अंदर से कोई outcome आएगी. Okay? So what that means is कि sample space में से एक कोई outcome लाजमी occur करेगी, and the outcome that will occur will definitely be in the sample space because it spans the entire set of the outcomes. Okay. Then we have a concept of event. Event is a subset of the sample space. Okay. It's not one outcome. एक outcome नहीं है, बल्कि event जो है could be a collection of outcomes, a union of multiple outcomes. ये outcomes को आप समझ लें कि ये set के elements हैं, और जो super set है जिसके अंदर ये सारे elements आते हैं वो sample space है, and event is a subset of that sample space. ठीक है? So if you roll two dice together, dice 1 पे 3 आ जाए और dice 2 पे 5 आ जाए, ठीक है? This is one outcome. 3, 5 is one outcome, one single outcome. ठीक है? Event क्या होगा? Event could be this outcome. Event could be this outcome, or event could also be a set of multiple outcomes. मिसाल के तौर पे ऐसा हो सकता है कि if you roll two dice together, an event can be described as union of some of the sample points or outcomes. Outcomes को हम sample points भी कहते हैं. ठीक है? When you roll two dice together, how many outcomes are possible? कितनी outcomes आ सकती हैं? If you roll two dice together, कितनी outcomes आ सकती हैं? चैट विंडो में आंसर देना चाहते हैं आंसर दे दें, माइक से आंसर देना चाहते हैं माइक से आंसर दे दें. So 36 possible outcomes. You get a 2 on the first dice and 4 on the second dice. ये एक outcome हो गई. 3 on the first dice and 6 on the second dice. ये एक और outcome हो गई. So you can see कि first dice के ऊपर 6 possibilities हैं और second dice के ऊपर 6 possibilities हैं. So total 36 different outcomes. 36 different outcomes, and we know that all these 36 outcomes are present in the sample space. The sample space is the full set, superset of all of those outcomes. Event क्या हो सकता है? Event ये हो सकता है कि some of the faces that you see when you roll two dice together, जिसमें 36 possible outcomes हो सकती हैं, एक example event, मैं ऐसे define कर सकता हूं कि sum of the faces is 3. Sum of the faces is 3. So इसके अंदर 2 outcomes आती हैं. एक तो ये outcome होगी कि पहली डाइस पे 1 आ जाए और दूसरी डाइस पे 2 आ जाए, या पहली डाइस पे 2 आ जाए और दूसरी डाइस पे 1 आ जाए. That's the only 2 ways that you can get a sum of 3.
ऐसे ही हो सकता है ना. So these two outcomes are contained in the event, So event is a subset of the sample space, and it can contain 0 or more outcomes. एक इवेंट ऐसा भी हो सकता है कि जो सैंपल स्पेस के किसी पॉइंट को कवर ना करे. मिसाल के तौर पे यू रोल 2 डाइस टुगेदर और आप कहें कि दोनों डाइस के ऊपर 7 आ जाए. वो कभी नहीं आ सकता, 7 होता ही नहीं है डाइस के ऊपर. सो यू कैन हैव एन इवेंट विच विल नेवर अकर. ठीक है. सो वी से दैट एन इवेंट अकर्स. हमें ये पता है कि जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो एग्जैक्टली वन आउटकम आएगी, एंड कौन सी आउटकम आएगी, वही तो रैंडमनेस है उसके अंदर कि कोई सी एक आउटकम आ जाएगी. So when you roll 2 dice together, you have 36 possible outcomes, and एक दफा एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक ही आउटकम आएगी, हमें पता नहीं है कि कौन सी आएगी. That's why it is a random outcome. Okay. So जो हमने इवेंट बताया कि sum of the faces is 3, पहले डाइस पे 2 आ जाए, दूसरे डाइस पे 1 आ जाए, तो इसका मतलब है कि ये इवेंट अकर कर गया. अगर पहले डाइस पे 1 और दूसरे पे 2 आ जाए, इवेंट अकर कर गया. पहले पे 2 और दूसरे पे 1 आ जाए, फिर भी ये इवेंट अकर कर जाएगा. ठीक है. सो दैट मीन्स कि द इवेंट विल अकर इफ एनी ऑफ द कंटेन्ड आउटकम्स वो अकर करती है. ठीक है. वी से कि एन आउटकम अकर्स. जब आप एक एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जो भी आउटकम आ गई हम कहते हैं ये आउटकम अकर की है. ठीक है. इफ there is an event which comprises many of these outcomes, उस इवेंट के अंदर बहुत सारी ये आउटकम्स कंटेन्ड हैं, तो हमें ये तो पता है कि मल्टीपल आउटकम्स नहीं आ सकती साइमल्टेनियसली. एक दफा एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक ही आउटकम आएगी. तो हम देखते हैं कि एक इवेंट के अंदर जितनी आउटकम्स हैं उनमें से कोई अकर की है या नहीं की है. अगर की है तो हम कहते हैं कि वो इवेंट अकर कर गया है. अगर नहीं की है तो हम कहते हैं कि वो इवेंट अकर नहीं किया है. ठीक है. And then we associate these positive numbers between 0 and 1 with the events that we call the probabilities. ठीक है. एक very common case है कि all the outcomes are equally likely outcomes, which means कि the chance that they will occur is equal to each other. ठीक है. So when you roll a single dice, एक डाइस को रोल करते हैं तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा. The chance that any one of these will occur is 1 over 6, is 1 out of 6. ठीक है. ये हम intuitively कह देते हैं. This can be proved by using what we call the, जो हमने इन लेक्चर्स में डिफाइन भी किए, एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी. एक्सियम्स को हम यूज करके हम ये प्रूफ भी कर सकते हैं. ठीक है. और ये नोट्स के अंदर हमने किया हुआ भी है. ठीक है. सो देन व्हेन वी से कि एक इवेंट जो है वो एक सेट है. इवेंट इज अ सेट, जो आपके यूनिवर्सल सेट या सैंपल स्पेस विच इज द बिग सेट जिसमें सारी आउटकम्स आती हैं, उसका सबसेट है. So in all practicality, an event is just a set which contains elements, और वो elements क्या हैं? वो elements outcomes. ठीक है. So इसका मतलब है कि ये जो events हैं इनके ऊपर मैं set operations कर सकता हूँ. ठीक है. We should be able to do set operations on these events. What that means is कि I should be able to take the complement of an event. ठीक है. जिस तरह सेट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, कैसे सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं कि यूनिवर्सल सेट में से या सैंपल स्पेस में से वो वाले एलिमेंट्स निकाल देते हैं तो कॉम्प्लीमेंट आ जाता है. ठीक है. आई शुड बी एबल टू टेक टू इवेंट्स विच आर रियली टू सेट्स, और मैं उनका यूनियन ले सकता हूँ, उनका इंटरसेक्शन ले सकता हूँ. 3 इवेंट्स कंसिडर करके उनका यूनियन, इंटरसेक्शन, एंड वी कैन परफॉर्म all kinds of sets operations on the events. Why? Because these events are really the sets. ये sets ही हैं, और इन sets के अंदर
जो elements हैं, each element is an outcome. Each element is an outcome. Once again, very important to realize that when you perform the experiment once, only one outcome will occur. Only one outcome will occur. ठीक है, एक से ज्यादा आउटकम नहीं आ सकती है, एक से ज्यादा आउटकम नहीं आ सकती है. ठीक है, so only one and exactly one outcome will occur. ठीक है, whether an event will occur or not depend करता है कि वो जो आउटकम अकर की है वो उस इवेंट का पार्ट थी या नहीं थी. इवेंट का पार्ट होने का मतलब ये है कि इवेंट इज अ सेट. डज दैट सेट कंटेन दैट आउटकम? वो आउटकम जो एक एलिमेंट है वो उस इवेंट के अंदर कंटेन्ड है या नहीं है. ठीक है, सो वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ आउटकम्स. जो हम एलिमेंट्स बना देते हैं सेट के, उन सारी आउटकम्स का सेट जो है वो उसको हम सैंपल स्पेस कह देते हैं. एंड देन वी कैन डिफाइन दीज लिटिल सेट्स on these outcomes in which the elements of each set is some of these outcomes. और अपनी मर्जी है, जैसे मर्जी हम इवेंट्स को डिफाइन करते हैं. ठीक है, ये ऐसे भी हो सकते हैं, ओवरलैपिंग इवेंट्स भी हो सकते हैं, नॉन ओवरलैपिंग इवेंट्स भी हो सकते हैं. ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं कि जो नॉन ओवरलैपिंग हो. एंड एग्जांपल ऑफ दैट वुड बी कि दो डाइस रोल करें और मैं कहूं कि एक इवेंट है कि सम ऑफ द फेसेस ऑन बोथ द डाइस इज 3. ठीक है, एक और इवेंट डिफाइन करते हैं, एक और इवेंट डिफाइन करते हैं और उसको कहते हैं कि सम ऑफ द फेसेस इज 5. ठीक है, ऑब्वियसली अगर सम ऑफ द फेसेस इज 3, द सम ऑफ द फेसेस कैन नॉट बी 5. और if the sum of the faces is 5, then the sum of the faces cannot be 3. So this is an example of two events. Event 1, which is sum of the faces is 3, and event 2, which is sum of the faces is 5. Event 1 and event 2 cannot occur simultaneously, and we call them mutually exclusive events. Mutually exclusive events. What that means is they cannot occur simultaneously. But that also means कि इनके सेट के जो एलिमेंट्स हैं, इवेंट 1 के अंदर जो एलिमेंट्स हैं और इवेंट 2 के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, विच आर रियली द आउटकम्स, उनके अंदर कोई ओवरलैप नहीं है. कोई एक भी आउटकम ऐसी नहीं है जो सेट 1 और सेट 2, इवेंट 1 और इवेंट 2 दोनों में पाई जाती हो, दोनों में इंक्लूडेड हो. ठीक है, if there is an outcome which is common, if there is an outcome which is the common element between two events, then these two events will not be disjoint. There is a possibility कि अगर वो वाली आउटकम आ गई जो दोनों सेट्स में पाई जाती है, तो both the events will occur. ठीक है, so simple concepts. कोई इसके बारे में क्वेश्चन हो, कोई डिस्कशन करनी हो, कोई कमेंट देना हो, feel free to unmute your mic and say it. कोई क्वेश्चन नहीं? जी रेहान. So when we have two events that are mutually exclusive, रेहान आपकी आवाज नहीं आ रही. Your mic is unmute but we can't hear you. Yeah, I can hear you now. Yeah. Okay. I was asking that if we have two events that are mutually exclusive, they still belong to the same sample space, right? If we are talking about two events which are mutually exclusive, okay, they belong to the same sample space. In fact, there is one sample space for every experiment. Okay? On that sample space, I can define any number of events that I want. ठीक है, उस sample space के ऊपर मैं जो मर्जी events describe कर सकता हूँ, and they will belong to the same sample space. ठीक है, on a different sample space, which means I perform a different experiment. ठीक है, if I perform a different experiment, I will have a different sample space, and then I can define whatever number of events I want to define on that sample space as well. वो भी कर सकते हैं. Does that answer your question? Yes.
Yes. So yes, if there are events which are mutually exclusive or maybe not mutually exclusive, defined on the same sample space, it is totally up to us how you define an event. But whenever you define an event, you have to define that event on a sample space. You have to define an event on a sample space. Okay? And there is a, by the way, there is a one-to-one association of a sample space and an experiment. एक experiment की एक sample space होगी. You perform an experiment, whatever is the possible number of outcomes, take the set of all of those outcomes, which are considered to be the elements of the set. That set is the sample space for that experiment. For a different experiment, I will have a different sample space. ठीक है? Any other comment? Any other question? So I have a question as well. If, for example, we're tossing a coin, but the coin is unfair, so it's biased towards heads, for example. Yes. The sample space will stay the same because we can only have two outcomes, heads or tails. But is there a way to represent the fact that the probability is not fair? It's biased towards one side? Yes, sample space does not include does not tell you representation of the set, does not tell you what is the associated probability of each outcome, does not tell you that. So it does not matter whether the coin is fair or unfair. The sample space will consist of just two elements, and those two elements are head and tail. These two elements are head and tail, which are the two possible outcomes. Okay. The sample space itself does not contain, does not include the corresponding probabilities of head or tail occurring. So for example, if you have an unfair coin and head occurs 60% of the time, tail occurs 40% of the time, sample space will not tell you this. However, these probabilities of each of the outcomes can be listed separately, not part of the sample space, but can be listed separately. So as I explained earlier, a common case, but that doesn't mean that's the only case, a common case is when all the outcomes are equally likely. If you have a fair coin, two outcomes, both the outcomes will be equally likely. If you have an unfair coin or a biased coin, then still two outcomes, but these two outcomes will be not equally likely. Okay, does that answer your question? Yes, it does. Okay. Nida, you have a question? Please go ahead. Yeah, sir. Could you explain question 7 from the homework? I mean, I know there's a hint, but I didn't really understand the question. Question 7 in homework 2, homework 3? Yeah, homework 3. Homework 3 and question 7. Let's open that. Okay. So here is an experiment which gets repeated. Problem 7 is, I'm going to read that. Okay, a pair of dice is rolled continuously until a sum of either 5 or 7 appears. So here is what you are doing. You roll 2 dice together and note the sum of the faces. ठीक है? ऐसा हो सकता है कि you got a 6 and a 4. So the sum is 10.
So what you will do is that you will continue rolling the dice. So your super experiment will consist of keep repeating the dice, keep repeating rolling the dice until the sum of the faces is 5 or 7. So the first time you see the sum to be equal to 5 or the sum to be equal to 7, you will be done. You will stop there. Okay? Otherwise, you will keep rolling the two dice together. Okay? On every roll of the dice, on every roll of the two dice, on every roll of the pair of dice, you will have a sample space. और वो sample space same ही रहेगी. ठीक है? Every time you roll the pair of dice, you will have a sample space. उस sample space में कितने points होंगे? 36 points होंगे. ठीक है? So, but that does not mean कि ये जो पूरा आपने एक्सपेरिमेंट किया है सीक्वेंस ऑफ रोलिंग द डाइस, इसके अंदर 36 पॉइंट्स हैं. इसके अंदर 36 पॉइंट्स नहीं है. तो पहली दफा 36 पॉइंट्स आ गए, फिर दूसरी दफा भी आपको रोल करना पड़ा. क्यों रोल करना पड़ा? बिकॉज neither 5 nor 7, the sum of the faces was neither 5 nor 7, so you had to roll the pair of dice again. उसको दोबारा रोल करना पड़ा. तो फिर another 36 possibilities, same sample space, but you have another 36 points. ठीक है? So the question is, what is the probability that a 5 occurs first? ठीक है? 5 occurs first. इसमें हमने hint दिया हुआ है. So there are multiple ways of solving this question, and we will learn a very cute way of solving this question in later chapters. लेकिन अभी इसको कैसे solve कर सकते हैं? अभी इसको ऐसे solve कर सकते हैं. If we follow the hint and we define the event, if we follow the hint, if we define the event En is an event. This is the hint which is given, which denotes the event that a 5 occurs on the nth roll. And that means if you have gone to the nth roll, that means कि पहले वाले n-1 rolls में ना 5 आया है, ना 7 आया है. ना 5 आया है, ना 7 आया है. So what is the probability? What is the probability that you will see a sum of 5? दो डाइस को आपने रोल किया है. What is the probability that the sum of the rolls is 5? Answers in the chat window, please. You rolled 2 dice together. दो डाइस को आपने इकट्ठा रोल करने और बताएं कि sum is 5. How many different? There is an event which says that the sum is 5. हमने पहले एग्जांपल अभी दी थी कि when you roll 2 dice together and the sum of the faces is 3, you define an event that the sum of the faces is 3. There are 2 ways you can get that. कि पहले डाइस पे 2 आ जाए और दूसरे डाइस पे 1 आ जाए, या पहले डाइस पे 1 और दूसरे पे 2 आ जाए. ठीक है? So there are 2 ways you can get. There are 2 ways you can get a sum of 3. Now I am asking कि you want the sum to be equal to 5. How many ways you can get the sum to be equal to 5? पहले डाइस पे 1 आ जाए और दूसरे पे 4 आ जाए. पहले पे 2 आ जाए और दूसरे पे 3 आ जाए, या पहले पे 3 आ जाए और दूसरे पे 2 आ जाए, या पहले पे 4 आ जाए और दूसरे पे 1 आ जाए. There are 4 ways you can get a sum to be equal to 5. Similarly, you can find out that there are 6 ways you can get the sum to be equal to 7. So when you roll 2 dice together, एक दफा उसको roll करें, the probability that you will see a 5 is 4/36, and the probability that you will see a 7 is 6/36. The probability that you will see a 7 is 6/36. So the probability you will see a 3, sum of 3 is 2/36. Sum of 3 is 2/36. Sum of 5 is 4/36. So
नाउ वी नो कि 4/36 प्रोबेबिलिटी। अब हमने क्या करना है? अब हमने करना ये है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि आपका जो एक्सपेरिमेंट है, वो पहली बार में ही खत्म हो जाए, पहले ही रोल पे खत्म हो जाए। ये कैसे हो सकता है कि पहले रोल के ऊपर खत्म हो जाए? ये कैसे हो सकता है, कोई बताएगा? If we get 5 or 7 on the first try. You get a sum of 5 or a sum of 7 on the first roll of the pair. ठीक है? So this is the event E1. This is the event E1. This is the event E1. And what is the probability of event E1? The probability of event E1. The probability of event E1 is 4/36. Why? Because we have defined the event E1 कि 5 occurs on that roll, और उससे पहले वाले रोल में, और ऑफ कोर्स अगर ये पहला रोल है तो उससे पहले तो हमने कोई रोल ही नहीं किए, सो पहले रोल के ऊपर 5 आ जाए, दिस इज इवेंट E1. नाउ व्हाट इज इवेंट E2? Do you want to explain what is event E2 according to the hint? It's the probability that there'll be a 7, so that'll be No, the total event, probability. no, Oh. the event E2 is, think about that. वो जो hint है उसको दोबारा से देखें कि En is the event that a 5 occurs on the nth roll. So E2 is the event. E2 is the event that a sum of 5 will occur on the second roll. E50 would be the event that a 5. Okay. You got it? Yeah, I get it. Yeah, I got it. So E2 is the event that a 5 will occur on the second roll, but that's not it. That's not it. We gotta be able to go to the second roll. That means on the first roll, we should not see either a 5 or a 7. पहले रोल के ऊपर 5 भी नहीं आना चाहिए और 7 भी नहीं आना चाहिए. What that means is कि पहले रोल के ऊपर सम जो है 5 और 7 के अलावा कोई होना चाहिए. That is also part of E2. So once again, read that. Hint में क्या बताया हुआ है कि event En is the event कि on the nth roll the sum is 5, and in the previous n-1 rolls you don't see a 5 and don't see a 7. इसका मतलब है in each of the previous rolls you don't see a 5 and you don't see a 7. Does that make sense? Yes. Okay, now we need to find the probability. We need to find the probability कि nth roll के ऊपर 5 आ जाए. As I said, it really does not matter कि ये roll कौन सा है. The probability that you will see a 5 on any of the rolls, because the sample space remains the same on each of the roll. The sample space will remain the same on each of the roll. So the probability that you will see a sum of 5 is always 4/36. What is the probability that that E1 will occur? Is 4/36. What is the probability E2 will occur? Now, this is the trick here. कि E2 is not just the event कि second roll पे 5 आ जाए. E2 is the event कि second roll पे 5 आए और पहले वाले रोल के ऊपर 5 या 7 में से कोई नहीं आया. ठीक है? That both of those conditions must be met for the first roll. Why is that? Because अगर पहले रोल के ऊपर 5 या 7 आ गया, you will not even go to the second roll. ठीक है? So you will stop the experiment. You will stop repeating the experiment whenever the 5 occurs or 7 occurs. ठीक है? And I am interested in finding the probability that 5 occurs first. So let's try to find the probability of E2. What is the probability of E2?
Probability of E2 is that कि फर्स्ट रोल के ऊपर ना 5 आए ना 7 आए, ठीक है. So would you like to state the probability that on the first roll you neither see a 7 or nor see a sum of 5? What is that probability? What is that probability? देखिए, हमें पता है कि हर रोल के ऊपर 5 आने की प्रोबेबिलिटी 4/36 है और 7 आने की प्रोबेबिलिटी 6/36 है. तो क्या चांस है कि ना 5 आए और ना 7 आए? सो 1 में से माइनस कर दें 4/36 एंड 6/36. 1 में से माइनस कर दें 4/36 एंड 6/36. ठीक है. सो व्हाट दैट मीन्स इज कि 1 में से माइनस कर दें 10/36. ठीक है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि एक रोल के ऊपर जब आपने रोल किया पेयर ऑफ डाइस को टुगेदर, you will see either a 5 or a 7. Either a 5 or a 7. So the question is, okay, you roll a dice, and please answer in the chat window. You roll a pair of dice. What is the probability you will see the sum to be equal to 5? सबने कहा 4/36. What is the probability that the sum is 7? सबने कहा 6/36. ठीक है. What is the probability that the sum is either 5 or 7? Either 5 or 7. That would be 4/36 plus 6/36. And why is that? Because ये हम ये इसलिए कर सकते हैं कि these two are mutually exclusive events, so we can just add the probabilities together using our axiom of probability. उसको use करके, जो third axiom है उसको use करके हम कह सकते हैं that you will see either a 5 or a 7. The probability of that occurring is 4/36 plus 6/36, which is 10/36. And what is the probability that you will neither see a 5 nor a 7 on the first roll? Is 1 minus 10/36. Is 1 minus 10/36. Everyone agrees with that? कि पहले रोल के ऊपर ना 5 आए और ना 7 आए. The probability of that is 1 minus 10/36. ठीक है. But that is not E2. E2 is कि पहले रोल पे 5 और 7 में से कोई नहीं आया and सेकेंड रोल के ऊपर 5 आ गया and सेकेंड रोल के ऊपर 5 आ गया. What that means is कि probability of E2 would be 1 minus 10/36, which is the probability on the first roll you did not see a 5 or a 7, multiplied by the probability that you see a 5 on the second roll, which is 4/36. Which is 4/36. ठीक है. Does this make sense? Yes, I get it now. You get it now? ठीक है. So you got E2, and then similarly you can find E3. E3 का मतलब ये कि पहले दो रोल्स के ऊपर आपके पास ना 5 आया ना 7 आया, which means 1 minus 10/36. 1 minus 10/36 on the first roll, multiplied by 1 minus 10/36 on the second roll, multiplied by 4/36 on the third roll. You got it? Yeah. So basically, for every we're going from n is equal to 1 to however many n until we get our 5 or 7. And the reason is we don't know when will 5 occur and when will 7 occur. Maybe it will take you 5 rolls, maybe it will take you 10 rolls, maybe it will take you 50 rolls. We don't know that. ठीक है. अगर जब तक 5 और 7 नहीं आएगा हम रोल करते जाएंगे. So that means कि ये जो मैंने इवेंट EN डिनोट किया हुआ है कि if E1 occurs then we win. Win का मतलब है कि 5 before 7 will occur if E1 occurs. ठीक है. If E2 occurs then we still win. If E3 occurs
we still win. All of these E's are telling you, that a 5 will occur before 7. E1 is telling you you got a 5 on the first row. E2 is telling you that you got a 5 on the second row and there was no 7 or 5 on the first row. Right? E5 E6 is telling you that on the first 5 rows you neither saw a 7 or a 5, and on the 6th row you saw a 5. So E1 or E2 or E3 or E4 or E5 or E6 or E7 or E8 or E9 all the way up to infinity, if any of these E's occur, then we win. We win means that 5 occurs before 7. 5 occurs before 7. So that means you have to sum these probabilities of E1 plus E2 plus E3 की probability plus E4 की probability plus E5 plus E6, E7 की probability, E8, E9 all the way up to infinity. In सबको आप add up करें, that is your desired probability. That is the probability that 5 will occur before 7 because there is no other way. There is no other way. यहाँ पे हमने सब कुछ ही consider कर लिया कि या पहले रोल पे जीत जाएंगे या दूसरे रोल पे जीत जाएंगे या तीसरे पे जीत जाएंगे या चौथे पे जीत जाएंगे. और जीतने का मतलब ये है कि पहले n-1 के ऊपर ना 5 आए ना 7 आए और nth के ऊपर 5 आ जाए. Make sense? Yes. So what this will mean is, interesting thing is that all of these EIs are mutually exclusive. Mutually exclusive. What that means is that you either win on the first roll or you win on the second roll. It cannot happen simultaneously. Cannot happen. ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि मैं second roll पे भी जीत गया हूं और first roll पे भी जीत गया. ये नहीं हो सकता. First पे जीत गए तो experiment खत्म. Second पे जीत गए तो इसका मतलब है फर्स्ट पे नहीं जीते थे, सेकंड पे जीत गए, एक्सपेरिमेंट खत्म. थर्ड पे जीत गए अगर, तो दैट मींस के फर्स्ट और सेकंड पे नहीं जीते थे और फर्स्ट और सेकंड के ऊपर 7 भी नहीं आया था, अदरवाइज एक्सपेरिमेंट ही स्टॉप हो जाता. ठीक है. सो फर्स्ट और सेकंड पे एक्सपेरिमेंट स्टॉप नहीं हुआ और थर्ड पे जाके इफ यू विन ऑन द थर्ड रोल देन द एक्सपेरिमेंट स्टॉप्स ऑन द थर्ड रोल. ठीक है. But if the experiment stops on the third roll, that means you did not stop on the first or second roll. Yeah. So all of these EIs are mutually exclusive. What that means is that the probability of the union is really the sum of the probabilities. Is the sum of the probabilities. या पहले पे जीत जाएं या दूसरे पे जीत जाएं या तीसरे पे जीत जाएं या चौथे पे जीत जाएं. These are all mutually exclusive events, and sum the probabilities of all of these events, and you will have a geometric series. एक infinite geometric series आएगी जिसको सम करना हमें आता है कि infinite geometric series को कैसे सम करते हैं, and you will get the answer. ठीक है. Yes, sir. And I had another question, but it's Sure. about the like the quiz that we had on Tuesday. So the first question, I mean, I don't know if the order was the same, but there was a question where they gave us like, oh, find the summation of like 0.12 to the power k from like k is equal to 0 to 8 or something like that. And then they said like use the binomial theorem. So how do you do that? Or any. Yeah. So yeah, it turns out that we missed a term there. I meant to put a and choose k there as well, which I did not by mistake. So it turns out that the binomial theorem will not be applicable there. Okay? We will have to use the summation, or summation जो है वो
You can use Wolfram Alpha, any online tool, या अपने calculator से वो कर सकते हैं. You can just solve it like that. So let me just quickly share my screen and tell you what I had meant. So you guys are able to see the screen? Yes, we can see it. Okay. So it was something like this. Summation k is equal to 0 to n, and choose k and p power k. I meant to give this question. By mistake, what I did is कि ये वाली चीज भूल गए हम, ये वाली चीज भूल गए, ठीक है? So we ended up, getting only this guy, ठीक है? So if you sum this, it turns out that you cannot solve this by using the binomial theorem. Binomial theorem is पे नहीं लगता. However, if you have a term like this is a candidate to apply the binomial theorem. Why? Because is the screen visible? Yeah. Visible, But है ना? से इस पे इतना टाइम लगा था, बाकी क्वेश्चन एंड में नहीं हुए. At the end. Okay, sorry about that. ये this is not fair sir. आप टाइम थोड़ा सा ज्यादा कर दे please. ठीक है. Depending on the quiz. But you know how to solve. But you know how to. Okay, that's a separate discussion. But you know how to solve this by using the binomial theorem. Yeah, फिर वो like 1 minus इसको कर 1 देंगे. power n minus k हो जाता है, and then this is p plus 1 power n. ठीक है? By using so this is application of the binomial theorem. ठीक है? But in all fairness, हमने or any other method भी लिखा था, binomial theorem or any other method. So it turns out कि binomial theorem से solve होता नहीं है, but any other method means k is equal to 0 to 7, for example, yeah, 8. Every person go, and you have, let's say, 0.8 power k. It's not time consuming to find this summation, either using your calculator or Wolfram Alpha, or ये easily find out कर सकते हैं. Okay, any other question? कोई और चीज डिस्कस करने वाली हो? So there is a very interesting topic जो in lectures में cover हुआ है. It's about the runs, and runs is basically the winning streaks. Okay, you can see कि आजकल PSL हो रही है, और PSL के अंदर ये मैचेस होते हैं, मुल्तान सुल्तान जीतते जा रहे हैं, ठीक है? So they have this winning streak. Okay, you win one match or two matches, उनकी streak है, win आ रहा है, तो that's one streak. So for example, if you can see the screen, तो इस screen पे ये जो आपके पास ये win की एक streak है, and then you have win another streak. ये win की एक single win की streak है, and then you have another streak. ठीक है? So these are 4 streaks of win, और जिसको हम कहते हैं streaks को runs कहते हैं, runs of wins. So ये बहुत सारे matches खेले हैं. So you win, lose, win, lose, etc. ठीक है? And if you write this in a sequence, then you have runs of wins. So I am interested in finding out in what is the probability of exactly R runs of wins.
R runs of wins. ठीक है, what is the probability of doing that? ठीक है, so see, if you play many matches, let's say n is 10 and m is 6, which means n wins and m losses. So मैं उनको किसी भी तरह अरेंज कर सकता हूँ. How many ways you can arrange that? ये आपके पास परम्यूटेशन से आ जाता है. ये आपके पास आ गया n plus m factorial. n plus m is the total number of matches that you have played, जिसमें से n factorial जो है ये इसलिए आया कि आपके पास n wins हैं और m factorial आया कि आपके पास m losses हैं. So that's the number of ways of arranging W's and L's. W's and L's, the number of ways of arranging those. ठीक है, उनमें से कोई भी अरेंजमेंट हो सकती है. How many of those arrangements will give you R runs? ठीक है, so जितनी भी अरेंजमेंट्स आती हैं टोटल आपकी, वो n plus m choose n है. ठीक है, उन सब में से let's say कि आपके पास few of those will give you exactly R runs. So the probability of R runs would be the number of arrangements which will give you R runs divided by the total number of arrangements. ठीक है, ये ऐसा ही है ना कि एक डाइस को अगर आप रोल करें, 1000 दफा उसको रोल करें, तो जितनी दफा 5 आएगा, जितनी दफा आपने 5 देखा, तो प्रैक्टिकली इसको ऐसे करके देख सकते हैं, जितनी बार 5 आया divided by the total number of times, which is 1000. So that would be the probability of getting a 5. ठीक है, इस केस में भी ऐसा है कि total arrangements W's and L's की कितनी हो सकती हैं. So that is the total number, out of which how many arrangements will have exactly R runs. ठीक है, तो वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? So उसको कैलकुलेट करने के लिए ये आप L's and W's को अरेंज करते हैं and you decide कि मैंने ऐसे अरेंज करना है कि ये x1, x2, xr, ये R runs of wins हैं. This is one run, this is another run, this is another run. These runs of wins are runs हैं. So I would like all of these W's to be, there has to be, एक रन होने के लिए यहाँ पे at least एक W जरूर होना चाहिए. So that means कि मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी है x1 plus x2 plus so on and so forth up to xr is equal to n. So I need the positive solutions of this expression, which means कि x1 1 or more होना चाहिए, x2 1 or more होना चाहिए, x3, x4 all the way up to xr 1 or more होना चाहिए. If I can do that, so that means मुझे यहाँ पे x1 वाली जगह पे एक w या एक से ज्यादा w आपको मिल जाएंगे. That is one run. लेकिन वो रन ऐसे नहीं होगा. ये I need to make sure कि ये y2 जो है ये दरमियान में ये लॉसेस ये ना हो कि ये गायब हो जाए. अगर ये गायब हो गए तो ये x1 और x2 ये तो मिल जाएंगे, ये तो एक ही रन हो जाएगा. So I need to make sure कि y2 is also greater than or equal to 1. y3 also greater than or equal to 1. ये एज पे जो y है ये लॉसेस ये गायब हो सकते हैं. So that means I can write an expression y1 plus y2 all the way up to yr plus 1 equal to m. ये टोटल आपके पास जो है ना m losses हैं. So y's are the number of losses. So edge वाले जो y हैं, ये edge वाले जो y हैं, they can be zero, but ये middle वाले जो y's हैं, they must be greater than or equal to 1. So if you can ensure both of these things, that means you have ensured कि आपके पास R runs, exactly R runs of wins आ गए हैं. ठीक है, so इनके solutions कितने हैं ये हमने last time पिछले वीक में किया है कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, and then multiply those numbers together, you will get the total number of ways that these x's satisfy this expression and these y's satisfy this expression. वो निकाल दें और उसको total number of arrangements से divide कर दें, तो that will give you the probability कि मुल्तान सुल्तान वाले एक 15 मैचेस खेलें इकट्ठे
तो उसमें से आर रन्स आपके पास उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है. यू कैन ऑलवेज फाइंड दैट आउट. सो दैट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग यूज ऑफ वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉल्स इन अर्न्स जो हमने किया था, जिसमें हमने ये इक्वेशन के सॉल्यूशंस हम निकालते थे. सो दैट्स ए वेरी interesting application of that. Ji Qasim, you have a question? Yes sir. Assalamu alaikum sir. वालेकुम सलाम जी. सर इससे प्रीवियस पेज पे आप जा सकते हैं. सॉरी सर इससे प्रीवियस पेज पे आप जा सकते हैं जिसमें आपने वो हेड्स थ्रो करने वाली एग्जांपल की हुई. जी जी बिल्कुल. सर जी सर इसमें आप ये बता सकते हैं कि ये आपने जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E1 EI1 और EI2 ये लिखा हुआ है सर ये किस तरह से, मतलब ये n-n आपने किस तरह से निकाला है? इस तरह से किया है. ठीक है, गॉट इट. सबसे पहले ये देखें कि EI क्या चीज है. EI इज द इवेंट. ये मैं इसको जो है ना ये सर्कल कर रहा हूं. EI इज द इवेंट दैट ith मैन गेट्स हिज ओन हैट. ith के पास अपना हैट आ गया उसके, ठीक है. सो द इवेंट E1 वुड बी दैट द फर्स्ट मैन got his own hat. I don't care about the others. ठीक है, I don't know about the others, but the first guy got his own hat. What is the event E2? That the second person got his own hat. नहीं पता हमें फर्स्ट का, थर्ड का, फिफ्थ का क्या हुआ है, but E2 is the event that the second person will get his own hat. ठीक है. So what is the event E2 and E5? What is this event? This event is that the second guy got his own hat and the fifth guy also got his own hat. I don't know about the other, but I do know that the second person and the fifth person, they both got their own hat. इससे एग्री करते हैं? Yes sir. इस बात से एग्री करते हैं कि E2 E5 का क्या मतलब है कि दूसरे को अपना हैट मिल गया और पांचवें को अपना हैट मिल गया, बाकियों का हमें नहीं पता. जी सर यहाँ तक ठीक है ना, ये एग्री कर गए. नाउ लेट्स कम टू दिस कि व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E2 E5. इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने वेज में ये हो सकता है? कितने वेज में ये हो सकता है? ये इतने वेज में हो सकता है कि दूसरे को मैं उसका अपना हैट दे दूं, ये देयर इज ओनली वन वे ऑफ डूइंग दैट. पांचवें को उसका अपना हैट दे दूं, देयर इज ओनली वन वे ऑफ डूइंग दैट. ठीक है, ये दोनों मैंने किया. बाकी जितने लोग बच गए हैं उनको रीअरेंज कर लें, उनकी परम्यूटेशन निकाल लें. ठीक है. सो यहां पर देखें, यहां मैंने कहा EI1 EI2 all the way up to IN. ये small n number of people हैं. All of these guys, they got their own hat. I don't know about the others. कितने बच गए बाकी? कैपिटल N में से स्मॉल n माइनस कर दें, उतने बाकी बच गए. जो बाकी बच गए हैं वो रीअरेंजमेंट कर सकते हैं अपने हेड्स की. हमें नहीं पता कि उनको अपना हेड मिलेगा या नहीं मिलेगा. आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन 2 and 5 कि उनको अपना हेड मिल जाए. इसी तरह यहां पर आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन I1 I2 I3 I4 अप टू IN. मैं सिर्फ इन लोगों में इंटरेस्टेड हूं कि इनको अपना हेड मिलना चाहिए. एंड देयर इज ओनली वन वे दे गेट देयर ओन हेड. The remaining capital N minus n guys, ठीक है, लेट्स से कि आपके पास 5 बाकी लोग बच गए, तो वो 5 फैक्टोरियल वेज में डिवाइड कर सकते हैं अपने हेड्स को. इफ यू हैव 5 पीपल और उन्होंने हेड्स डिवाइड करने, 5 फैक्टोरियल वेज में डिवाइड कर सकते हैं कि पहला हेड जो है वो उन 5 में से किसी को जाएगा, दूसरा हेड जो है बाकी 4 में जाएगा, तीसरा हेड, ये परम्यूटेशंस हैं बेसिकली. ठीक है. सो n कैपिटल N माइनस स्मॉल n जो लोग बच गए हैं, ठीक है, in how many ways they can shuffle their hats together, permute their hats together, is capital N minus n factorial ways. Make sense? Yes sir.
ठीक है. सो ये मैंने ये ट्राई भी की एक्सप्लेन करने की, शायद इतना अच्छा हुआ नहीं है, कि इट इज गारंटीड कि दीज स्मॉल एन पीपल गॉट देयर ओन हेड. These small n people, they got their own head. There is only one way of doing that. And the remaining capital N minus n people, क्योंकि टोटल तो आपके पास कैपिटल N है ना, टोटल तो कैपिटल N है. The others may or may not have gotten their own head, and that can be done in capital N minus small n factorial ways. ठीक है, जी सर समझ आ गया. समझ आ गई ना. हेड मैचिंग भी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है. फिर बर्थडे वाला एक प्रॉब्लम था, बर्थडे वाला भी एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम इसमें सॉल्व किया हुआ है. So anything else that you guys want to discuss? कोई और चीज डिस्कस करनी है? So what I realize is कि homework 3 में हमने ये runs में से कोई क्वेश्चन दिया नहीं है. So unfortunately you will not be able to get practice on that, but you know this topic is something that we have seen before. वो quiz 1 में भी आपको jars में marbles डालने वाला वो पूछा था, and in the previous homework we saw that elevator problem, fish problem, वो हमने देखे थे. So hopefully you will have some practice from there. यहाँ पे ये runs वाले इस अगर कोई problem हो इसमें तो you should be able to solve that as well. I meant to give a problem, a couple of problems in homework 3 on these topics, लेकिन ये इसमें आए नहीं है, ये skip हुए. सर आप इसकी अलहदा से अपलोड करते हैं, लाइक फॉर प्रैक्टिस. For practice, ये book के end पे दिए हुए, book के end पे दिए हुए हैं. Maybe I can specify a couple of problems. कुछ self test exercises हैं और कुछ जो हैं वो problems हैं, theoretical exercises हैं. Maybe a couple of those I will specify. Okay, thank you. ठीक है. Yeah, adding more problems to the homework may be not a good idea. सर ये जो बर्थडे वाली प्रॉब्लम है जी, इसमें अगर हम 23 पीपल से ज़्यादा लोग हमारे एक रूम में होंगे, ठीक है, तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ द टू एटलीस्ट 2 पीपल हैविंग डिफरेंट बर्थडेज वो कम होनी चाहिए. नहीं, 50% से ज्यादा हो जाएगी. having at least 2 people having the same birthday, having the same. मैं डिफरेंट की बात कर रहा हूँ. अगर मतलब एटलीस्ट 2 पीपल हैव डिफरेंट बर्थडेज, ठीक है. नहीं, at least 2 people have different birthdays नहीं. देखें, at least 2 people have same birthday या everyone has a different birthday. ठीक है. At least 2 people have different birthday का मतलब है कि बाकी सब की एक ही दिन है. नहीं, वो तो बहुत कम probability होगी. When you say कि at least 2 people have different birthday, that's a very, वो इतना इंटरेस्टिंग सवाल भी नहीं है. इतना इंटरेस्टिंग सवाल नहीं है. क्यों? At least 2 people have different birthday. बाकी सब की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या सेम हो जाएगी? Not very interesting problem. इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम ये है कि एक रूम के अंदर आपने 10 लोगों को भर दिया है. क्या चांस है कि उन सब की बर्थडे जो है ना वो डिफरेंट है, या क्या चांस है कि उनमें से एटलीस्ट 2 ऐसे हैं जिनकी सेम बर्थडे है, which means के 1 minus the probability उन सब की डिफरेंट है बर्थडे. So those are the interesting problems here. So the astonishing thing is that के
365 days होते हैं आपके पास, only with 23 people. एक कमरे में मैं सिर्फ 23 लोग भर दूं, so the probability that they have different birthdays, okay, no two have the same birthday, ठीक है, they have, all of them have different birthday, is less than 0.5, which means के ये probability 0.5 से कम रह जाती है कि उन सब की बर्थडे अलग अलग होगी सिर्फ 23 लोगों के ऊपर, और 23 से ज्यादा करेंगे तो फिर तो और भी कम हो जाती है, इतनी जल्दी कम हो जाती है। ऐसे लगता है 365 डेज हैं, सिर्फ 23 लोग हैं आपके पास, तो कोई बिग डील नहीं है, इन सबकी बर्थडे अलग अलग ही होनी चाहिए। बड़ा अनलाइकली है कि दो की बर्थडे एक जैसी हो जाए, बड़ा कम होता है ऐसा, राइट। सो 23 लोग अगर डाल दिए ना तो ये प्रोबेबिलिटी सिर्फ 0.5 से भी कम रह जाती है। जी, एनी अदर क्वेश्चन? कोई और क्वेश्चन हो? So just a quick poll here. Was everyone able to watch both the videos and read through the notes? मैं अलग-अलग पूछ लेता हूँ, दोनों वीडियोस किस-किसने देखी हैं? Show of hands. So half of the people. Yeah, it would be really nice कि if you can watch the video, तो discussion जो है वो फिर समझ भी आएगी। How many people have gone through these set of notes? ये जो मेरे पास ये set of notes हैं जो मैंने share भी किए थे, कितने लोगों ने set of notes देखी हैं? ये भी देख लिया करें। It's not too time consuming. ये हम typically ये करते हैं कि weekend से पहले ही share कर लेते हैं। So weekend पे spend a couple of hours, 2-3 घंटे आप लगा लें अगर, तो 2 घंटे में वीडियोस देखी जाती हैं, और if you spend another couple of hours on the notes, तो कोई इशू ही नहीं होगा। You will, I think बड़ा ये हमने कोशिश की है कि हाईली समराइज्ड फॉर्म में ये नोट्स लिख दें। It is great if you can get the time to read the book. There is no substitute for that. लेकिन अगर थोड़ा टाइम सेव करना है तो एटलीस्ट ये नोट्स जरूर पढ़ लें, और इनमें ऑब्वियसली के समराइज्ड फॉर्म है, सो मे बी नॉट एवरीथिंग विल बी क्लियर, सो यू माइट हैव टू रेफर टू द बुक जहां जरूरत पड़ती है, तो बुक देखें और फिर वहां से जो है वो क्लैरिटी आ जाएगी। ये और आस्क द क्वेश्चन, प्याजा पे सवाल पूछ लें, या व्हेरेवर ये सेशंस हैं उनके अंदर सवाल पूछ सकते हैं, ऑफिस आवर्स में सवाल पूछ सकते हैं, एटसेट्रा। बट हम सिर्फ ये मटेरियल अवेलेबल ही कर सकते हैं। इट्स एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर कि वो चीजें आप पढ़ रहे हैं जो आपको दी गई हैं, या वीडियोस हैं उनको देख रही हैं। सो इट्स टोटली अप टू यू। So last couple of minutes, anyone else wants to make any comment? कोई query हो, anything maybe related to the material या in general course के बारे में? चीजें जो हैं वो बाय एंड लार्ज समझ आ रही हैं आप लोगों को? सर आपके जो ऑफिस आवर्स होते हैं वो वेंसडे वाले दिन होते हैं ना? नहीं, आप ईमेल भेजें तो हम किसी भी टाइम पे कर लेंगे, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। वैसे वो मैंने एक जनरल टाइम स्लॉट रखी हुई है वेंसडे को 4 से 5। उस टाइम पे एक मीटिंग भी हो रही होती है, ऑनलाइन ही होती है वो, बट आई एम टिपिकली अवेलेबल। उसके बाद भी अवेलेबल होता हूँ, उससे पहले भी अवेलेबल होता हूँ। दैट्स
I try to be available during that time, but I am mostly available. Send an email अगर कुछ चीज आपने डिस्कस करनी हो. अगर वैसे ही कोई छोटा सा सवाल है तो सबके बेनिफिट के लिए प्याजा पे पोस्ट कर दें. अगर कोई ऐसी चीज है जो जो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट की नहीं है, तो यू कैन सेंड एन ईमेल. तो ईमेल पे आपको जवाब दे देंगे. और अगर उसके लिए आपको जूम सेशन करने की जरूरत हुई तो जूम सेशन भी हम कर सकते हैं, अदर देन वेडनेसडेज एज वेल. Okay, sir, got it. ठीक है. All right, guys. So I'm going to stop the sharing now and close the session unless there is anything last minute you want to say. चलें, ठीक है. I will inshallah see you on Tuesday.